Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very good and staying very safe and sound at your homes. So, class 4, it's your English lecture and it's 8th of September, Wednesday. So, hurry up, open your CUA copies and have your course books open and have your pencil erasers in your hands. We're going to start our learn to read one exercise. Okay, so open the page number 54. Okay, so we are going to do the learn to read one of chapter number 5. Who did Patrick's homework? Okay, so as you know, we have previously done words, meaning, and sentences. I hope you all have done them on your CUA copies, and I will check them soon, inshallah. So now come to learn to read one. Okay, so these are blanks. Number 1, Patrick liked to spend his time dash. Patrick को पसंद था अपना वक्त गुजारना किसमें? Yes, in playing cricket and football. Instead mean bajai ke, yes, instead of doing homework. Yes. Number 2, Patrick agreed not to give the elf to the cat if Patrick ने इस बात पे माना कि वो elf को cat के हवाले नहीं करेगा, लेकिन मगर कब किया? अगर A, he stayed with him for a month, अगर वो उसके साथ 1 महीने के लिए रहेगा. Number B, he worked for him for a month, अगर वो 1 महीने के लिए उसके लिए काम करेगा. He did all his homework till the end of the month, या वो पूरे महीने तक उसका होमवर्क करेगा. Yes, number C is the correct one. Sure, so you will put a tick in this box. Comes to number 3. Did the elf like the idea of doing Patrick's homework? Yes or no? क्या क्या elf को पैट्रिक का होमवर्क करने का आइडिया पसंद आया था? नो, यस, उसको पसंद नहीं आया था. इफ़ यू रिमेंबर दैट he was getting so angry. He was showing that he didn't like this idea and he don't want to do the homework. And he was making very weird faces in front of the Patrick. So it clearly shows that he didn't like the idea of doing Patrick's homework. Okay, so now question number 4. So you have now question number 4 and 5. These two you all have to do on your CUA copies. All right. First you will write the question, then you will write the answer. Okay. So question number 4 is this, and this you have to do in your CUA copies. First you will ready the pages, then you will write the chapter name, and then you will start your question. You will write answer the following, and then you will write this question. What problem did the elf have when he started doing Patrick's homework? कह रहे हैं elf को क्या मसले मसाइल आए थे जब वो उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया था. So how we will write? Maybe we'll write from the question. You will write elf was having problem in किस में उसको मसला आ रहा था. I am very sure that you all know this answer. Or you all have to think about it and then you all have to write your answers. Okay, so as I'm not with you, I'll give you a little hint that maybe he was having problems in finding in the meanings of words and in mathematics, right? He didn't like maths and he was having problems in new words. तभी उसने पैट्रिक को कहा था कि जाके go and get me a dictionary. Okay, so elf was having problem mathematics and in reading words. उसको लफ्ज़ पढ़ने में मसला हो रहा था क्योंकि उसको लफ्ज़ों का मतलब ही नहीं पता. ठीक है, elf was having problem in mathematics and in reading words. Okay, लफ्ज़ पढ़ने में. Number 5, fifth question is who do you think actually did the homework, Patrick or the elf? आपको क्या लगता है कि असल में किसने होमवर्क किया था? पैट्रिक का. पैट्रिक नहीं, अपने elf ने. Yes, I hope you all know this answer. Yes, very good. Who did the homework? Actually, who do you think actually did the homework? Patrick. ये अब आपने बताना कि आपको क्या लगता है. Yes, Patrick did the homework by himself. Elf को बहुत मसले मसाला आ रहे थे. Elf उससे पूछता था और उसे कहता था ये आधा काम तुम करो और ज़्यादा काम उसको ही दे देता और सारा होमवर्क जो था पैट्रिक को खुद ही करना पड़ता था. वर्ड्स फाइंड करने, मैथ्स का काम करना वो खुद ही कोशिश करता था. And if you remember that he stayed up late night and then he went to school with puffed eyes. तो late night जागता था पैट्रिक और अपना होमवर्क कंप्लीट करता था, खुद ही से सॉल्व करता था. लेकिन फिर भी उसके जहन में यही बात थी, उसको लगता था कि कहीं एल्फ मेरी हेल्प कर रहा है और एल्फ ने ही मुझे होमवर्क करवाया. बट इन एक्चुअल पैट्रिक खुद ही अपना काम कर रहा था. पैट्रिक वॉज लर्निंग एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, राइट? सो your fourth and fifth question will be done by you on receiver copies. Now come to learn to read 2. Okay,
हाउ मेनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट टी अगेंस्ट देम। ओके ना, नीचे 5 सेंटेंसेस में से आप देखिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, आपने उनमें जो जो सही है उनके आगे टी लिखना है। नंबर 1 सेंटेंसेस, द एल्फ डिडंट नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, एल्फ को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स नहीं आते थे। इज इट ट्रू? यस, यू विल राइट टी हियर। द एल्फ मेड पैट्रिक डू मोस्ट ऑफ होमवर्क हिमसेल्फ, एल्फ ने पैट्रिक को आधे से ज़्यादा होमवर्क जो था ज़्यादा से जो होमवर्क होता था वो एल्फ जो था पैट्रिक को खुद करने के लिए कहता था। येस, ट्रू। पैट्रिक बिलीव दैट ही गॉट गुड ग्रेड्स बिकॉज द एल्फ हैड हेल्प हिम डू द होमवर्क, पैट्रिक को इस बात पे यकीन था कि उसके जो अच्छे मार्क्स आए थे रिजल्ट में वो सिर्फ एल्फ की मदद करने की वजह से आए थे, राइट। जबकि पैट्रिक ने खुद वो अपनी मेहनत के मार्क्स लिए थे, लेकिन उसको लगता था कि एल्फ ने उसकी कहीं ना कहीं मदद की है, एल्फ की वजह से उसके मार्क्स आए हैं। नंबर 4 इज व्हेन द एल्फ लेफ्ट पैट्रिक रियलाइज्ड दैट ही हैड डन ऑल द होमवर्क हिमसेल्फ, जब एल्फ चला गया तो पैट्रिक को यकीन हो गया, उसने इसके बाद का एहसास किया कि शायद उसने सारा होमवर्क खुद ही किया था। उसको एहसास हुआ था एंड पे नो, वो एंड तक सोचा था कि शायद एल्फ ने मेरी मदद की, एल्फ ने मेरा मुझे गुड ग्रेड्स दिए, ठीक है। सो इट्स नॉट ट्रू, सो यू वॉन्ट राइट हियर टी। आफ्टर हिज एक्सपीरियंस विद द एल्फ पैट्रिक वॉज अ चेंज पर्सन, जब जो पैट्रिक जो था एक बदला हुआ इंसान बन गया था। जब एल्फ के साथ उसने इतना वक्त गुजारा, उसके बाद से जब एल्फ चला गया तो हम देख सकते थे कि पैट्रिक जो था एक बदला हुआ इंसान था, राइट। कि पहले उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, उसको सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल में इंटरेस्ट था, लेकिन जब एल्फ किया तो पैट्रिक एक चेंज इंसान था। उसने अपने अच्छे ग्रेड्स लिए, ही यूज्ड टू डू ऑल हिज हाउस चोर्स, ही यूज्ड टू क्लीन हिज रूम, ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन नाउ, ही वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बॉय नाउ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं दैट ही वॉज अ चेंज पर्सन, सो यू विल राइट हियर ट्रू, you will write here T. So these are the today's tasks. You have to do it. You have to do these in the books. And 4th and 5th question of Learn to Read 1 you have to do on your CBOOK copies. So good luck for this. I hope you will complete your today's task, inshallah. And I will meet you in the next lecture. Till then, take care, my class. Allah Hafiz.